Hello students, welcome to Shiji's Hindi classes. In this session, we will be doing chapter 4 of Sparsh Bhag 2, Manushyata. It's a poem written by Maithili Sharan Gupta. I have done many chapters of Sparsh Bhag 2. I will be sharing the link of all the videos in the description. If you have not seen it, you can go through the same. If you like my video, do share it with your friends so that it will be useful for them as well. Also, don't forget to subscribe and like my channel and press the bell button for future notification of my videos. Let's start with the poem. The name of the poem is Manushyata. Manushyata is basically humanity. So in this, the poet Maithili Sharan Gupta is talking about the humanity, how we should be or how should we behave with others. So let's see the first 6 lines. विचार लो कि मरते हो न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यूं मरो कि याद जो करें सभी. हुई न यूं सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए, मरा नहीं वही कि जो जिया न आपके लिए. वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरें, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे. विचार मीन्स सोच लो और थिंक. मर्त्य मीन्स मृत्यु, डेथ. यों मीन्स ऐसे, दिस वे. सुमृत्यु, इस तरह की मृत्यु नहीं हुई, मीन्स if you don't die like this. वृथा, बेकार, worthless. आपके, अपने लिए, for ourself. पशु प्रवृत्ति, पशु जैसा स्वभाव और behave like animals. आप, अपने लिए means for ourselves. So what the Kavi wants to say in this 6 lines? What is he saying? Poet is saying कि we should know. In the first 2 lines basically he is saying that we should know that our death is destined. Like we will die surely. If we have taken birth, then surely we are going to die. Okay, so we should not be afraid of death. Okay, this is fact, this is the truth. So we should not be afraid of death. So how we should die? So what Kavi is saying, that death is inevitable, but we should die in such a way that people should think about us after our death also. That is what he is saying in the first 2 lines. The next 2 lines he is saying, if you are not going to die like this, okay, if your death is not like this, in which way? Like if you are not going to help others, or if you are not going to think about others, and if you die, then that death is worthless. Okay, it is totally waste. And till you live your life, that life also become totally worthless, totally waste. So if you are only thinking about yourself and if you are not doing anything for others, the death and the life till you live, both will be totally waste. Okay, so what type of people are in this life? There are those people who like after their death also they are not dying. Like after their death also, because they have done so many good deeds, they are still in the mind, or they are still in the heart of people. Okay, so they are the real people. Okay, so those people, like in the second 2 paragraph, Kavi is saying those people are not considered, like they will not die. After their death also they will live in the memory of the all the people because of their good deeds. So they will not be considered as dead after their death also. Okay. In the last 2 lines, Kavi is saying like animals.
they, what is their behavior? That is like they only live for themselves. So living for themselves, it's who do that? Only animals do that. So how we human should be like? The real human should be considered as those only who is always ready to sacrifice their life for others. इन 6 पंक्तियों में कवि बता रहे हैं कि मृत्यु निश्चित है, तो हमें मृत्यु से नहीं डरना चाहिए। और कवि कहते हैं कि हमें इस तरह से मरना चाहिए कि हमारे मरने के बाद भी लोग हमें याद रखें। और अगर हम दूसरों के लिए कुछ किए बिना सिर्फ अपने लिए ही सोचकर या अपने लिए ही जीकर मर जाते हैं, तो वो जीना और वो मरना दोनों ही बेकार हो जाता है, क्योंकि वही मनुष्य इस संसार में नहीं मरते जो दूसरों के लिए जीते हैं। आखिरी 2 पंक्तियों में कवि बता रहे हैं कि जानवर, सिर्फ इस जानवर ही हैं जो अपने लिए जीते हैं। ओके, मनुष्य कौन है? मनुष्य किसे हम कह सकते हैं? जो दूसरों के लिए अपना जीवन बलिदान देने को तैयार रहते हैं। Now let's see the next 6 lines. उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती, उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति पूजती, तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। अखंड आत्म भाव जो असीम विश्व में भरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। उदार मीन्स महान, श्रेष्ठ, ग्रेट। बखानती मीन्स गुणगान करना, प्रेस। धरा मीन्स धरती, अर्थ। कृतार्थ मीन्स आभारी, thankful. Sada means hamesha, always. Sajeev means jeevit, alive. Kirti means fame. Pujti means karna, do. Samast means sabhi, entire. Vishwa means world. Pujti means pray. अखंड मीन्स जिसके टुकड़े ना किए जा सकें, मीन्स समथिंग विच यू कैन नॉट ब्रेक, विच यू कैन नॉट ब्रेक इट इनटू पीसेस। असीम मीन्स पूरा, entire. In the first 2 lines, poet is saying that these great people, like those who are ready to sacrifice their life or those who are helpful, such people even are goddess Saraswati. Okay, they even goddess Saraswati also praise about such people. Okay, they are always considered as great, and they are always considered in our religious books or in all the stories. Okay, that is like their greatness are like we will never forget about their greatness, or it is like mentioned in religious books, or by Kavi also it is being mentioned in so many stories and all. In fact, our goddess mother like Saraswati also prays about these people. Okay, and we are always thankful. The entire people of this earth, they are also very grateful towards these great people. In the next 2 lines, what Kavi is saying is like such great people, okay, they are always considered like those who are still alive. We always consider like them in the same way, because they are always we always talk about them or whatever great things they are done even after their death also. So that is, they are amongst us, in fact, after their death also. And the entire world, what they do, they worship such great people. And in the last 2 lines, what Kavi is saying that these those people who brings togetherness amongst everyone. Okay, the feeling of this they have there's no discrimination in their thoughts or in their feelings. Okay, they spread unity amongst everyone. They are always considered as the real human being. यहाँ कवि कहते हैं कि जो व्यक्ति दूसरों के लिए अपना बलिदान देने को तैयार रहते हैं या दूसरों के लिए सोचते हैं, स्वयं सरस्वती भी
उनके गुणगान करती हैं। अर्थात ऐसे लोगों की धरती में पूरी धरती उनके लिए आभारी रहती हैं, ऐसे व्यक्तियों के लिए। और मतलब कवि का कहना है कि उनके मरने के बाद भी उनकी उनका गुणगान किया जाता है। मतलब वो मरने के बाद भी वो लोग जीवित रहते हैं और पूरी सृष्टि, जो पूरी धरती है या पूरा सृष्टि है, उनकी पूजा करती है। और कवि का कहना है जो व्यक्ति ऐसे भेदभाव और भावनाओं से बिल्कुल अपने आप को अलग रख के सब में सबको एक साथ बांध के रखते हैं या सब में एकता लेके आते हैं, वही मनुष्य असली में मनुष्य कहलाते हैं। शुद्धार्थ रतिदेव ने दिया करस्त थाल भी, तथा दधीची ने दिया परार्थ अस्थि जाल भी। उशीनर क्षितीश ने स्वमास दान भी किया, सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया। अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। शुद्धार्थ मीन्स भूख से परेशान और व्याकुल, स्टार्विंग। थाल मीन्स प्लेट, थाली। Ratidev is a great king, राजा, ओके, परमदानी राजा। करस्त हाथ में पकड़ा हुआ, something which he was holding in his hand। ददीची एक प्रसिद्ध ऋषि, he is a very famous ऋषि। परार्थ जो दूसरों के लिए हो, और entire which is something for someone else, okay, और the entire you can say। अस्थिजाल हड्डियों का समूह, it's like bone mass। उशीनर क्षितिश means उशीनर देश के राजा, the king of उशीनर देश, his name was शिवी। स्वमास अपना मास, his entire flesh। सहर्ष खुशी से, with happily। शरीर चर्म शरीर का कवच, protection of his body। अनित्य देह नश्वर शरीर या नष्ट होने वाला शरीर, something which is going to destroy। अनादि जीव means human, मनुष्य। In this 6 lines, Kavi is saying, basically in the first 2 lines, what Kavi is giving, he is giving the examples of selfless person in the entire 6 lines. So in the first 2 lines, he is giving the example of Raja Ratidev as well as the great Rishi Dadichi. So what Raja Ratidev did, he was starving, okay, without food, and what he did, he was having the last plate of food in his hand, and a person who was also starving, because he was also hungry, what he did, he gave that last plate which he was holding in his hand to the other person, okay. And what Dadiji did, he's a great rishi, he gave his entire bone mass as a donation as to other who was in need. And the next 2 lines, they are giving the example of Raja Shivi, who is the Ushinar Raja of Ushinar, Shivi. What he did, like he gave his entire flesh, okay, his body. Why? To save a pigeon, he gave his entire mass, that is flesh, as to that kabutar, means that pigeon. And what Karna did, happily, very happily, he gave his kavach, means that was the main thing which was given for his protection, okay. He knew that after giving that protection, that kavach, he will not be able to survive. Still, he gave that protection to others very happily, okay. So these were the 4 examples which were given about these selfless people. Now, what Kavi is basically saying, our body, like this is definitely, it will destroy, that is we will die. So why we are afraid of death? Anyways, we have to leave this body and we have to die. So who is considered as a real human being? The one who is ready to sacrifice his life for others. सो इन 6 पंक्तियों में कवि परोपकारी लोगों का उदाहरण दे रहे हैं। उन्होंने सबसे पहले राजा रतिदेव का दिया है। उनके पास एक ही थाली थी, पर उन्होंने
दूसरों को वो थाली जो उनके पास वो आखिरी थाली रखी हुई थी वो खुशी खुशी उन्होंने किसी और को दे दिया जो खुद वो भूख से परेशान थे। बल्कि राजा रतिदेव भी भूख से परेशान थे। तब भी जब उन्होंने दूसरे किसी को देखा जिसको खाने की ज़रूरत है, उन्होंने वो पूरा थाली उस आदमी को दे दिया। उसी तरह दधीची जो हमारे श्रेष्ठ ऋषि हैं दधीची, उन्होंने अभी अपना पूरा अस्थिजाल मीन्स जो अपनी पूरी हड्डियों का समूह वो दान में दे दिया। कुशीनर के राजा शिवी, उन्होंने भी कबूतर की जान बचाने के लिए अपना पूरा मांस दान में दे दिया था। वही कर्ण भी, उन्होंने भी खुशी खुशी क्या दान में दे दिया था? अपना कवच, जो उन्हें कब मिला था? उनको अपनी सुरक्षा के लिए, उनके जब उन्होंने जन्म लिया था उस वक्त उनको वो कवच मिला था, वो ही उन्होंने बड़ी खुशी से दान में दे दिया। तो यहाँ पे कवि कहना चाहते हैं हमारी मृत्यु निश्चित है। ये जो शरीर है ये नश्वर शरीर है और हमें डरना नहीं चाहिए, क्योंकि एक दिन हमें इस शरीर को कुछ भी हो छोड़कर जाना है। तो मनुष्य वही कहलाते हैं जो अपने प्राणों का त्याग दूसरों के लिए खुशी खुशी करने के लिए तैयार रहते हैं। सहानुभूति चाहिए, महाविभूति है यही, वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं मही। विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा, विनीत लोक वर्ग क्या न सामने झुका रहा। आहा वही उदार है परोपकार जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। सहानुभूति, दया, सिंपैथी। महाविभूति मीन सबसे बड़ी संपत्ति, बिगेस्ट प्रॉपर्टी। वशीकृता, वश में करने वाला, कैप्टन। मही, ईश्वर। विरुद्ध भाव, खिलाफ होना, अगेंस्ट। विनीत, विनम्र, पोलाइट। उदार, दयालु, कंपैशनेट। परोपकार, दूसरों के लिए उपकार करने वाला, those who do good things for others. So in the first two lines, Kavi is basically saying that we human beings should have the feeling of sympathy, or we should be compassionate for others. Okay, and this is your biggest property. That love, compassion, sympathy all these things is your biggest property. And those people who is having all such feelings towards others, even God will also help these people only. Okay, in the next two lines, what Kavi he's giving an example, that he's giving the example of Mahatma Buddha. Okay, what he was not able to bear the feelings or the pain of people who was really struggling during that days. There was so much of differentiation, discrimination, higher caste, lower caste, or people with rich people. So there was so much of discrimination. So he was totally against these rules, systems which was followed in the society. Okay, and he really fought for all these people. Okay, but do you really think people are not at all thinking about him? He was always compassionate about others. He always had sympathy towards others. Still, people, although he was against the rules which were being followed, but still people bow in front of him, or they respect Gautam Buddha. We still consider him as a great person, right? So that much respect or value we are giving him because of his love and affection for people. The last two lines it is saying, so who is considered as a real human being? Or a person with sympathy? Those who are selfless and those who are always ready to help others. Okay, and those who are always ready to help or support others, they are only considered as a real human being. Those who live their life for others, not for themselves, but they are living for others, they are always considered as the real human being. So यहाँ पे कवि क्या कह रहे हैं? कवि कहते हैं कि जिनके मन में दया और करुणा है, वो जो सबके मन में जो दया और करुणा होता है, वो ही सबसे बड़ा धन है। उससे बड़ा धन और कुछ इस दुनिया में नहीं है। और जिनके मन में दया और करुणा का भाव होता है दूसरों के लिए, उनकी ही भगवान भी
सहायता करते हैं। जो दूसरों की सहायता करते हैं भगवान भी उन्हीं की सहायता करते हैं। सो कवि ने इधर गौतम बुद्ध का उदाहरण देते हुए, महात्मा बुद्ध का उदाहरण देते हुए कहा है। महात्मा बुद्ध मतलब उनसे दूसरों का दुख देखा नहीं किया। उस वक्त के जो नियम थे वो बिल्कुल ही उनके खिलाफ थे, तो वो हमेशा उनके खिलाफ लड़ते रहे। लोगों का दुख उनसे सहन नहीं किया जाता। पर इसका मतलब ये तो नहीं है कि उनको आज भी लोग मानते नहीं। उनको आज भी लोग मानते हैं, आज भी लोग उनकी पूजा करते हैं। तो वही मनुष्य कहलाते हैं जो दूसरों की सहायता करते हैं या दूसरों के लिए अपने मन में दूसरों के लिए परोपकार या करुणा का भाव रखते हैं, जो अपने लिए न जीकर दूसरों के लिए जीते हैं। रहो न भूल के कभी मंदात तुच्छ वित्त में, सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में। अनाथ कौन है यहाँ त्रिलोकनाथ साथ हैं, दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं। अतीव भाग्यहीन है अधीर भाव जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। मंदात मीन्स घमंड, ईगो। तुच्छ मीन्स बेकार, वर्थलेस। विथ धन, मनी। सनाथ जिसके पास अपनों का साथ हो, मीन्स दोज हु हैव फैमिली टू सपोर्ट। चित्त मन, माइंड। अनाथ जिसका कोई नहीं, ऑर्फन। त्रिलोकनाथ और दीनबंधु, बोथ मीन्स ईश्वर, गॉड। अतीव सबसे ज़्यादा, मोस्ट। अधीर बचकानापन मीन्स childishness. So in the first two line, poet is saying that we should not have the attitude or ego that we have money with us, okay? And again, we should not have this attitude that we have a family to support us. In the second two lines, why God is saying, why the poet is saying like that? Because as per him, there is no orphan in this world. Why? Because we have God to support him, us. Okay, so there is no orphan. We all have a God, and He's our great Father, and He's having such a big arm that He's ready to hold us in His big hand. That much big is His heart as well as His arm. He can hold everyone in His arm. In the last two lines, what poet is saying that it's really childishness, and we consider them as really unlucky. Okay, who feels like that, who is having such childish thought that I have money and I have family, so I have everything. So that is really childish thinking, because the real human being is one who is always ready to help others. Okay, who is not having such thoughts and feelings. तो यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि हमें इस तरह का घमंड नहीं होना चाहिए कि मेरे पास बहुत सारा धन है, या मेरे पास मेरी पूरी फैमिली या मेरे रिश्तेदार हैं मेरे साथ रहेंगे। क्योंकि कवि इसलिए ऐसा कह रहे हैं क्योंकि यहाँ इस दुनिया में कोई भी अनाथ नहीं, क्योंकि हम सबका एक ही पिता हैं, वो हमारे परम परमेश्वर हैं, वो हमारे साथ हैं। तो यहाँ कोई भी अनाथ नहीं, उनके हाथ इतने विशाल हैं कि वो उस हाथ में सबको समेट सकते हैं। तो जो इस तरह की सोच रखता है, जो बचकानी सोच रखता है, वो ही सबसे भाग्यहीन होते हैं। निर्भाग्यशाली उन्हीं कहलाते हैं, क्योंकि मनुष्य तो वही कहलाता है जो हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहता हो। अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव हैं खड़े, समक्ष ही स्वभाव जो बढ़ा रहे बड़े बड़े। परस्परावलंब से उठो तथा बढ़ो सभी, अभी अमर्त्य अंक में अपंक हो चढ़ो सभी। रहो न यूं कि एक से न काम और का सरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। अनंत मीन्स जिसका कोई अंत ना हो, देयर इज नो एंड। अंतरिक्ष आकाश, स्काई। समक्ष सामने, इन फ्रंट। स्वबाहु हाथ मीन्स योर आर्म्स। परस्परावलंब एक दूसरे का सहारा, ईच अदर सपोर्ट। अमर्त्य अंक देवता की गोद, लैप ऑफ गॉड। अब या इस तरह, in this way. In the first two lines, poet is saying that in the sky, okay, sky is just basically it's a never ending, right? So in that sky, so many god and goddess are standing. And why they are standing?
They are standing there with their wide hands open, and they are standing there to welcome all those people who are real human, means those who have done good deeds, helping others, or selfless persons. Okay, that type of people. So they are standing in that sky and they are waiting with their wide hand open to welcome them. And the next two lines, Kavi is saying that we have to we have to always help others. So if we progress in our life, at the same time we should allow others also to progress in their life, because if we do any good bad things in our life, even God will not be there to support us. They will also not be there with us. So and the last two lines, what Kavi is saying, that like how we should be like that, we should not only help only those people who will help us, or who like we are helping them for some purpose. Like they, if we help us, some of our purpose will also be fulfilled. With that intention we should never help others. That is, we should not try to find any gain or profit out of that. Okay, so the real person is someone who is always ready to do good for others, who is always ready to help others. So इसमें कवि क्या बता रहे हैं कि आकाश में अनंत अंतरिक्ष, मतलब जो जिसका कोई अंत नहीं, ऐसे आकाश में अनंत देवी देवता खड़े हैं। और वो क्यों खड़े हैं? वो अपनी भुजाएं खोलकर उन लोगों का स्वागत कर रहे हैं जो दयालु हैं और जो परोपकारी हैं। और वहाँ पे क्या है, हमसे क्या कह रहे हैं कवि? वो कहते हैं कि हमें सिर्फ हमारा नहीं सोचना चाहिए, हमें अपनी उन्नति के साथ दूसरे लोगों का भी उन्नति के बारे में सोचना चाहिए। क्योंकि देवता जो देवी और देवता जो हैं वो भी उन्हीं की सहायता करते हैं जो दूसरों की सहायता करते हैं। मतलब कलंक रहित होकर ही हम देवताओं की गोद में बैठ सकते हैं। जब तक हम दूसरों के लिए अच्छा नहीं करेंगे, भगवान भी हमारी मदद नहीं करेगा। तो कवि का कहना है कि हम सिर्फ उनकी मदद ना करें जो जिनसे हमें लाभ हो। इस तरह का भाव नहीं रखना चाहिए कि हम उन्हीं की मदद करेंगे जिनसे हमें कुछ लाभ हो। नहीं, मनुष्य वही कहलाते हैं जो हमेशा दूसरों के कल्याण के लिए और दूसरों की सहायता के लिए हमेशा सदैव तैयार रहते हैं। मनुष्य मात्र बंधु है, यही बड़ा विवेक है। पुराण पुरुष स्वयंभू पिता प्रसिद्ध एक है। फलानुसार कर्म के अवश्य बाह्य भेद हैं, परंतु अंतरैक्य में प्रमाणभूत वेद हैं। अनर्थ है कि बंधु ही न बंधु की व्यथा करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। Bandhu means bhai bandhu, your nears and your relatives. Vivek samaj, your thoughts, your knowledge. Swayambhu, स्वयं उत्पन्न होने वाला, self born. Who is that? That is God. पुराण पुरुष, पुराणों में स्वयं उत्पन्न होने वाले पुरुष. Again here we are talking about God. Okay, self born man. That is God itself. Okay, praman bhut, sakshi, witness. Vyatha, dukh, your pain or sorrow. So the first two lines, what Kavi is saying, that we all human beings are brothers and sisters, right? We all are connected to each other. This we should know. This is the fact and we should know. And why? Because in our religious books, in our old religious books also, it has been mentioned that the self-born man, who is that? The self-born person, that is God. That is always God, and He is the only great Father. He is the only Father of us. Okay, this is the thing we should all know. Okay, in the second paragraph, that is what our poet is saying. As per our karma, whatever deeds we do, okay, according to that only we are going to get the fruits. Okay, if we do good things, we will get good things, like good things happen in our life. If we do some bad things, we have to face that. So according to our karma, our future is totally dependent on that. Okay, but what happens? But after our death, okay, whatever it can be, according to the deeds you did, but after, this is the truth. Okay,
and our like हमारे वेद means our old books, our granth, all these are the witness that our soul is one. Okay, that is not different. Whatever karma you do, you will face according to that. But our soul, okay, that is already mentioned in our granth, ved, everything, that is one, that cannot be separated or that cannot be changed. So in the last two lines, he's saying, bhai, if I'm not going to help or support my own nears and dears, okay, if I'm not going to support my own brother, like we all are brothers and sisters, if I'm not going to help others, then it's of no use of this life. I'm just wasting my life. This life is worthless. Why? Because as a human, we always have to help others, we always have to be selfless, and we always have to support each other. That is what here कवि is saying. तो यहाँ पे कवि कह रहे हैं हम सब भाई बंधु हैं. ओके, और हम पुराणों में भी ये कहा गया है कि जो भगवान है वो सबके भगवान ही हम सबके पिता हैं. ओके, तो हम सब क्या हुए, फिर सभी भाई बंधु हुए. तो उसके अनुसार क्या है, वेदों में कहा गया है कि हमारे कर्मों के अनुसार हमारे फल अलग अलग हो सकते हैं. ओके, परंतु हमारे आत्मा जो है वो एक है, उसको हम अलग अलग नहीं कर सकते, सभी आत्मा एक है. और कवि का कहना है कि हम सब भाई बंधु हैं, तो हमें हमेशा एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, तभी हमारा जीवन व्यर्थ है. अगर हम अपने भाई के काम ना आए तो यह जीवन का कोई अर्थ नहीं, वह व्यर्थ हो जाता है. तो हमेशा हमें दूसरों के लिए परोपकार और मदद करनी चाहिए. लास्ट पैराग्राफ. चलो अभीष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए, विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें ढकेलते हुए. घटे न हेल मेल, हाँ बढ़े न भिन्नता कभी, अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हो सभी. तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तेरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे. अभीष्ट मीन्स इच्छित, अकॉर्डिंग टू द विश. रास्ता मार्ग, रूट. सहर्ष अपनी खुशी से, लाइक हैप्पीली, whatever you want. विपत्ति means problems, संकट. विघ्न means बाधाएं, obstacles. सतर्क means सावधान यात्री, very careful traveler, passenger. मेल झोल, हेल मेल means मेल झोल, like together. भिन्नता means differences. समर्थ means संभव, possible. तारता अपना और दूसरों का कल्याण करें, means not only ours but we should do good for others also. In the first two lines, poet is saying like Manusha, like we human being, we select our own route, right? And we whatever path we are selecting for ourselves, we should go in that path happily. Okay, and whatever problems or obstacles come in that while going in that path, you have to just ignore that and you have to move forward. Okay, you should not get upset, or you should not give up in between. You have to follow that route because that is the route you have decided for yourself. Okay, and we should be always together with each other. We should always maintain a very good relation with each other. Okay, and the differences, the feeling of discrimination or differences, okay, that there should not be amongst each other. Okay, means without any arguments and without any hesitation, as a very careful traveler, we have to move forward in our life. The last two lines, what poet is saying, ये सब all these things when it is possible, when we are doing good for us as well as when we are doing good for others also. Okay, not only for us, we have to do good for others at the same time, because we will human, though only those are considered as human who always are ready to do good for others also. So आखिरी पंक्तियों में कवि कहते हैं कि हम जो भी देखते हैं, रास्ता चुनते हैं, वो हमारी इच्छा के अनुसार चुनते हैं. तो उस रास्ते में हमें खुशी खुशी चलना चाहिए. अगर कोई संकट या मुसीबतें उस रास्ते में आती हैं तो उनके ठकेलते हुए बिल्कुल
निराश हुए बिना खुशी के साथ हमें मतलब हिम्मत नहीं हारना चाहिए और खुशी के साथ उस रास्ते में आगे बढ़ते रहना चाहिए। ओके, और जो मेल जोल है एक दूसरे के साथ उसको कभी ख़त्म नहीं करनी चाहिए। छोटी छोटी बातों पे हमें एक दूसरे से भेदभाव नहीं रखना चाहिए या तर्क, एक दूसरे से कोई तर्क वितर्क नहीं करना चाहिए। एक सावधान यात्री की तरह हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। कवि का कहना है ये सब तभी संभव है जब हम अपना कल्याण करें, साथ ही दूसरों का भी कल्याण करें, क्योंकि वही मनुष्य कहलाते हैं जो दूसरों का भी कल्याण करते हैं। With this we have finished this poem. Hope it's clear to you. In case if you have any queries, you can send your query to my comment box. I will review and reply to the same. In the next session we will be doing a new chapter. Till then, take care and bye.